Gene therapy. Gene therapy involves the introduction of one or more foreign genes into an organism to treat hereditary or acquired genetic defects. यानी जीन थेरेपी में किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक डिफेक्ट्स, चाहे वो हेरिडिटरी हो या एक्वायर्ड हो, उनमें फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करके उनकी करेक्शन की जाती है। जीन थेरेपी मीन्स थेरेपी और ट्रीटमेंट थ्रू जीन्स। Approaches involved in gene therapy are: number 1, non-specific location, in which a normal gene may be inserted into a non-specific location to replace a non-functional gene within the genome. यानी इसमें नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है और इंसर्ट किया जाता है नॉन स्पेसिफिक लोकेशन पे, ताकि वहाँ पे जो नॉन फंक्शनल जीन है जीनोम के अंदर उसको रिप्लेस किया जा सके। सेकंड अप्रोच इज the first one, that is non-specific location. This is the more common approach in gene therapy. Second, which is a homologous recombination approach, in which an abnormal gene could be swapped for a normal gene through homologous recombination. And this method, homologous recombination, is used, in which the crossing over occurs and the abnormal gene is swapped out and the normal gene is introduced. यानी यहाँ पे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के ज़रिए से अब नॉर्मल जीन को निकाल के नॉर्मल जीन उसकी जगह लगा दिया जाता है। नंबर थर्ड, सेलेक्टिव रिवर्स म्यूटेशन, in which the mutation is done and the abnormal genes could be repaired through selective reverse mutation, which reverse the gene to its normal function. And this reversion is done through mutation in the gene, in which the abnormal gene is corrected to make it functional. Number fourth, that is gene turned on or off. The regulation of a particular gene could be altered directly by turning off gene, to turn on the gene or to turn off the gene. यानी जो पार्टिकुलर जीन है, अगर वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा तो उस जीन को या ऑफ कर दिया जाता है या उसको ऑन कर दिया जाता है। अगर काम नहीं कर रहा तो उसको ऑफ कर दिया जाता है, ताकि वहाँ पे वो जो उसका एक्सप्रेशन ना हो सके, या उसको ऑन कर देते हैं। दैट इज़ जीन टर्न ऑन और off. So these were the four approaches used by many researchers in the gene therapy, but the most common approach that is used is the insertion of normal gene into a non-specific location. Types of gene therapy. There are two types of gene therapy, that are somatic gene therapy and germline gene therapy. Somatic gene therapy, in which the somatic cells, that are body cells, are targeted for foreign gene transfer, means that in the somatic gene therapy the body cells are used, and these body cells are targeted for the foreign gene. Foreign gene means that the normal genes to be inserted. And this somatic gene therapy is not heritable.
It means that it is restricted to the individual patient, and after therapy, these genes, these normal genes couldn't be transmitted toward the offsprings during the next generation. यानी सोमैटिक जीन थेरेपी चूँकि बॉडी सेल के अंदर की जाती हैं, इस वजह से ये हेरिटेबल नहीं है, यानी नेक्स्ट जनरेशन में ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता क्योंकि ये सिर्फ उसी इंडिविजुअल पेशेंट तक ही महदूद रहता है. Second is the germline gene therapy, in which the germ cells are involved. Germ cells means sperm or ova, means the gametes. And this therapy, the germ cells are targeted for foreign gene transfer. And this is heritable, mean the therapy done in this germ cells. So these normal genes are then transferred from generation to generations. यानी जर्म लाइन जीन थेरेपी अगर कर ली जाए जर्म सेल्स में, चूँकि जर्म सेल्स जो है वो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट करते हैं, इस वजह से ये हेरिटेबल हैं. यानी वो ये दिस इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द इंडिविजुअल पेशेंट, यानी सिर्फ उस पेशेंट तक ये रेस्ट्रिक्ट नहीं रहेगा, बल्कि अगर उसके ऑफस्प्रिंग आएंगे तो उनमें भी करेक्ट जीन ही जाएगा. सो दैट इज़ द जर्म लाइन जीन थेरेपी. Methods used for gene therapy. There are two methods, that are ex vivo gene therapy and in vivo gene therapy. First one, that is ex vivo gene therapy, in which the transfer of gene into the patient cells outside the body. It means that gene is transferred outside the body and to the patient cells, that the patient cells are taken out from the body, then the genes, the normal genes are inserted into their cells, and then these cells are reintroduced into the patient body after correction. यानी एक्स विव जीन थेरेपी जो है ये लैब के अंदर किया जाता है. पेशेंट की बॉडी से नॉर्मल जो सेल्स हैं जिसमें एबनॉर्मल जीन्स हैं उनको निकाल दिया जाता है, और आउटसाइड द बॉडी फिर उसमें नॉर्मल जीन को ट्रांसफ़र करके इन्हीं सेल्स को वापस बॉडी के अंदर रख दिया जाता है ताकि वो अपना नॉर्मल फंक्शन कर सके. दैट इज़ एक्स विव जीन थेरेपी. स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एक्स विव जीन थेरेपी. Number 1, cells taken from the patient, either from the hematopoietic cells or from the skin cells. Hematopoietic cells are those cells, these are the immature cells which form either WBCs or RBCs. So the cells are taken from these two sources, maybe from hematopoietic or maybe from the skin cells. Then a culture is prepared which contains the normal genes. So here the growth of cells is done in that culture. After the growth, the transformed cells are selected and then multiplied, and after multiplication these cells are reintroduced into the patient's body. Look here, that is the patient. For example, stem cells removed from the patient, and these stem cells are put into the culture, and that culture, the therapeutic gene which is inserted into the viral DNA, and this viral DNA is present in that culture. This is called the viral transduction in lab, and which these viruses transfer their cells in the patient stem cells. As a result, the cells become transformed, and then these transformed cells are selected and reintroduced into the patient. यानी पेशेंट की बॉडी से स्टेम सेल्स रिमूव किए जाते हैं
और स्टेम सेल्स को कल्चर के अंदर डाल देते हैं। जो थेराप्यूटिक जीन है जिसको हम नॉर्मल जीन कहते हैं उसको वायरल डीएनए में इंसर्ट कर देते हैं। फिर इन्हीं वायरसेस को इसी कल्चर में ऐड कर लेते हैं, जो कि यही वायरसेस जो है ये फिर जो डीएनए है जिसमें नॉर्मल जीन है उसको उन सेल्स में ट्रांसफ़र कर देता है। आफ्टर ग्रोइंग जो है यही जो इनको हम ट्रांसफॉर्म सेल्स कहते हैं और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वायरल ट्रांसडक्शन। और यही जो ट्रांसफॉर्म सेल्स है फिर इनको निकाल के पेशेंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं ताकि वो अपना नॉर्मल फंक्शन कंटिन्यू रख सकें। In vivo gene therapy, it involves the transfer of clone genes directly into the tissues of the patient. In vivo means within the body, यानी ये जीन थेरेपी जो है ये डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी के अंदर की जाती है एंड विच द abnormal gene is replaced with a normal gene by direct injection of the or by direct introduction of the gene into the human body. Reason for in vivo gene therapy is it is done in the case of those tissues whose individual cells cannot be cultured in vitro like brain cells, यानी जिसके सेल्स को इन विट्रो कल्चर नहीं किया जा सकता जिस तरह ब्रेन सेल्स हैं, तो उस केस में फिर इन विवो जीन थेरेपी की जाती है। Method for in vivo gene therapy, there are two methods, that is the viral mediated gene delivery and the second one is the non-viral mediated gene delivery. First, which is the viral mediated gene delivery and which the viral vector is involved and mostly retroviruses are used for that purpose. Steps involved in viral mediated gene delivery: target cells. Target cells like liver or lung cells of the patient are infected with the viral vector. This viral vector means mostly the retroviruses are used. So this viral vector contains the therapeutic human gene. First, the human gene is inserted into the viral vector and then the target cells are infected with that viral vector. After infection, the vector then unloads its genetic material. The genetic material consists on the therapeutic human gene. So the vector then unloads its genetic material onto the target cells. As a result, the target cells came to its normal state and starts its normal function. वायरल मेडिएटेड जीन थेरेपी डिलीवरी के अंदर जो वेक्टर यूज़ किया जाता है दैट इज़ अ वायरस जिसको रेट्रोवायरसेस कहते हैं। सबसे पहले रेट्रोवायरसेस के अंदर थेरेप्यूटिक ह्यूमन जीन यानी जो नॉर्मल जीन है उसको इंसर्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद इन वायरल सेल्स का अटैक किया जाता है टारगेट सेल्स के ऊपर डायरेक्टली। टारगेट सेल्स में भी लिवर सेल्स और लंग सेल्स, और इसको इन्फेक्ट कर दिया जाता है। आफ्टर इन्फेक्शन वेक्टर जो है जिस तरह नॉर्मली जब कोई भी वायरस अटैक करता है तो अपना जीनोम ह्यूमन सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करता है, बिल्कुल उसी तरह ये वेक्टर अपना जो जेनेटिक मटेरियल है जिसके अंदर थेराप्यूटिक ह्यूमन जीन्स हैं तो उसको उस टारगेट सेल के अंदर अनलोड कर देता है, मींस कि उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है। और यही जीनोम जो है यही जेनेटिक मटेरियल जो है वो पूरे सेल को पूरे सेल पे वो काबिज हो जाता है, यानी उसको अपना फंक्शन जो है वो स्टार्ट कर लेता है और जो एबनॉर्मल सेल का फंक्शन है उसको सप्रेस कर लेता है। एज अ रिज़ल्ट टारगेट सेल जो है वो नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। नॉन वायरल
gene delivery and which viruses are not involved. Here, the artificial lipid spheres are produced and with an aqueous core is created. These artificial lipid spheres are known as liposomes, and these liposomes contain therapeutic human genes. Cell is targeted directly with the liposome, and the liposome can pass easily through the cell membrane because the liposome consists on lipid. So it can easily pass through the cell membrane. यानी यहाँ पे आर्टिफिशियली एक स्फीयर बनाया जाता है जो लिपिड का बना होता है और एक्वियस कोर होता है इसका. इसके अंदर थेरेप्यूटिक ह्यूमन जीन को डाल देते हैं और फिर चूंकि ये भी लिपिड का बना होता है, सेल मेम्ब्रेन में भी लिपिड है, तो इसलिए जब इसको डायरेक्टली इसका अटैक किया जाता है सेल के ऊपर तो ये उसमें इजीली उसके मेम्ब्रेन में पास हो जाता है और अंदर चला जाता है जहाँ पे ये अनकोड होके जो नॉर्मल जीन है उसको सेल के अंदर डाल देता है. दिस इज द लाइपोसोम containing therapeutic gene having a lipid sphere. Lipid sphere consists on the hydrophobic tail and the hydrophilic head, and surrounding is the aqueous solution or aqueous core. Look here toward the diagram. This is a simple diagram for the gene therapy. Here is a therapeutic gene, transgene packaging into the vector, that is a virus. These therapeutic genes are packaged into the vector. Then the vector is injected into the patient. This is the viral mediated gene delivery. While the non-viral mediated gene delivery in which the liposome is injected directly into the patient.